Hello everyone, audio video clear अच्छी. Extremely sorry, बहुत ही late है गला ऐसे. Sorry for that. Sorry. Please मत दे कही दे audio video clear so that I can start the class. All clear? Sorry. Sorry for the delay and yes. मैम मिठा दियंतु को खुशी रे मिठा आज कौन की मिठा कौन पे ग्रे. So hello everyone, I am Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me how are you all? New phone आखि ना तुमरा काच बाटी माने फोन टा भी तुम जान दोछ ना कि केबे एटा अमित मु कहिथिली मन इच्छा तम मानकर गप मोबाइल मोर जाईची हॉस्पिटल को सेथि पई as of now गोटे स्पेयर फोन एटा यूज करूची सेटा भी तम मानकर न्यू फोन लागला ना कि आज्ञा ओके जीबा क्लास स्टार्ट करिबा नुआ फोन रे मिठा जो माने आसीओ देबी आउ एते गप करनी बुझिलो मिठा आसीओ जदी त मानकु दिया हबो मना करिवेनी चलो स्टार्ट करिबा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास एडवर्टाइजमेंट एंड रे टिके भल रे करिबा ना कि लास्ट फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट करि देबा बिकॉज़ डेली ऑलरेडी 12 मिनिट लेट हे गलानी ना कि मौसुमी थैंक यू फॉर आस्किंग बहुत ही मस्त अच्छी एंड आज तमान को गाली भी पड़िबानी मूड ठीक ठाक अच्छी हैला चलो. As per the census 2011, the census ratio in Puri district stands at. Guys, Puri district रो census हमें कौन कहिबा केते 2011 latest census हमें कोटा को like relate करूचे जे कोनोसी क्वेश्चन आपन को पचारिबा the latest census according to 2011. Okay, yes Asmita, that is what will be the right answer. The 963 as per 1000 male. So as per the 2011 census, the sex ratio in Puri district was 963 females per 1000 males. And guys, कौन होची ना child sex ratio केते थिला 0 to 6 years भितरे 932 females per 1000 male. Rural sex ratio जदी कहबा 969 females per 1000 male. Urban sex ratio पचाले 931 females per 1000 male. एते की मन रखि परिबो. Next question for you. Which of the following district has a higher sex ratio? Has what? Now has a higher sex ratio, guys, but a lower literacy rate than Odisha as a whole. Odisha ra ame jodi average gote neba ko district guys thila ko district thila lowest has a higher sex ratio but literacy rate kona na low thila. What have right answer? Rayagada, Cuttack, Kendrapada, Jashpur. Obviously, Rayagada hi haba, na. So, based on the 2011 census data for Odisha, guys, the state's overall sex ratio kete thila na 979. Eta apan pachariba as of Odisha ra kete average sex ratio thila. Yaku mone rakho. And with that, like 979 is always the female ratio per 1000 male. And the literacy rate kete thila Odisha ra pachaichi 2011 re
कोना ऑन एंड एवरेज 72.87% एटा भी आपण मानकर कोना एग्जाम रे पकोच ओके then one district that fits the criteria of having a higher sex ratio but a lower literacy rate than Odisha is Rayagada एति के मन रखिबा sex ratio केते 1048 higher than the state average of 1979 माने कोन ना normal male ratio to female ratio guys एठी अधिक थिला but literacy rate कोन थिला ना कम ही थिला okay so literacy rate guys the search result indicate that the district in western and southern parts of Odisha where the Rayagada guys western side रे हमर कोन निहाती literacy rate टिके कम थाय rather than the normal eastern zone or southern zone oh sorry central zone हैला चलो नेक्स्ट गुड इवनिंग एवरीवन गाइस आ कोन गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहया को टाइम अछि ना जत्ते जल्दी जत्ते अधिक क्वेश्चन हम मन रखि परिबा एग्जाम पई है ना अल्बर्टो बुझिली नेक्स्ट को द बौद्ध और द बंडा डिस्ट्रिक्ट कोन बौद्ध डिस्ट्रिक्ट को बंडा डिस्ट्रिक्ट काई कहते बंडा ट्राइबल लोक माने बंडा ट्राइबल पीपल माने आपन को अधिक देखिया को सेठी मिलिबो है ना सो द डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्मड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ व्हाट गाइस को डिवीजन रो अपन मानकर फॉर्म हेछि मयूरभंज रो त केबे हबो नाही सॉरी संबलपुर केबे हबनी इवन मयूरभंज रो हबनी ऑप्शन कोन ना दीटा रे अपन माने कंफ्यूज हेबे कोड आसीबो सुहासिनी सोनल सोनल राति रे ठीक ठाक रे पाठ पढुछो ना राति रे सोनल ठीक ठाक पाठ पढा होछि तो ओके सो दिस इज व्हाट ना मैम फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट so the Baudd district was formed from the division of the Fulbani region which was the previous name for the Kandhamal district so the new Baudd district was officially created on January 2 1994 after the reorganization of the district in Odisha clear मैम साउंड टिके लो अछि गाइस साउंड पूरा फुल देछि रे कोन करि परिबी को साउंड पूरा फुल देछि स्टिल त माने को लो सुबुछि देखे रहलो माइक टिके चेंज करि साउंड ठीक अछि ना गाइस एबे कहलो साउंड ठीक अछि साउंड फुल अछि हां बा साउंड फुल अछि जो मानकर मोबाइल खराब से मान को साउंड इशू आसुछ ना कि सब भलो भलो ब्रांडेड मोबाइल धरि पकोछ पूरा सैमसंग रो लेटेस्ट सीरीज आईफोन रो लेटेस्ट सीरीज फिर भी त मानकर मोबाइल खराब देखो सब सस्ता फोन धरचंदी फिर भी तांकर साउंड भलो अछि बुझिस चलो सो Baudd district is Fulbani next mate को Indravati water project is located in which district of Odisha guys Indravati water project कहिला में को डिस्ट्रिक्ट को रिलेट करूछे इंद्रावती को कहिला को डिस्ट्रिक्ट को अमित एटा देखिछो Oh, the Indravati water project is located in which district of Odisha? Navranpur, Koraput, Malkangiri or Ganjam? कौन हबा राइट आंसर ए फॉर ए कोठी कोरापुट ता ए कोठी अछि रे ए रे कोठी हमर कोरापुट लेखा आइसी मैम क्वेश्चन प्लीज टिके अगेन कहि दियंतु बुझी हेलानी प्रीवियस क्वेश्चन ने कोन अछि गायत्री प्रीवियस क्वेश्चन कोन अछि गायत्री पचल ना ज्योति मामा अच्छा ज्योति सो द बौद्ध डिस्ट्रिक्ट गाइस एटा जो बंडा लिखिছে सेथि पय तमाने कंफ्यूज हो जा बंडा गोटे ट्राइबल ग्रुप रो ना कोन ट्राइबल पीपल गोटे कम्युनिटी रो ग्रुप रो ना होची बंडा तो से मारे बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रे देखा जान सेथि पय एटा बंडा लिखा जायछि ओके सो डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्मड फ्रॉम द डिवीजन को डिवीजन वेटा फॉर्म हेछि या फिर ए जो बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रो को डिवीजन गाइस फॉर्म हेछि फुलबाणी डिवीजन फॉर्म हेछि बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रो आपण कोन फुलबाणी डिवीजन फॉर्म हेछि एटा ही तो क्वेश्चन ना हां चलो नेक्स्ट ओके इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट कोठी ऑप्शन आसुछ ऑप्शन कोन आसुछ तमरा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट कोन हबो ना मैम कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट राकेश कुमार बाय बाय टाटा गुड नाइट so the project is a large scale multi-purpose initiative focused on the hydroelectric power generation and the irrigation project and guys components kon hochi na it includes 4 dams 8 dikes and a power plant with 150 megawatt 150 करी के आपनकर केते ना टोटल 600 मेगावाट रहछि जदरे कि प्रति यूनिट रो 150 मेगावाट तार कोन ना मैम कैपेसिटी अछि total capacity is 600 megawatt irrigation guys the water released from the power plant is used to irrigation approximately 1,28,000 hectares of land in the Kalahandi district clear chalo jiba next jiba
yes, but somehow पिला माने टिके confuse हे जानती because the project is located in the Mukhiguda, which is in the Kalahandi district. टिके देखो approximately 85 kilometers from the district headquarters of Bhawanipatna. Some parts of the project, including a civil wing office, is also located kouti na ma'am Nabarangpur. So initially jodi apno pachagala ko district सहित मिसिकी अछि इंद्रावती project, then your answer could be the Nabarangpur. But jodi singly pacharichi tahali your answer Kalahandi. Clear? Kalahandi रे option नाही. Kalahandi option नाही. Oops, sorry कोरापुट टाकू मते कलाहांडी एक्चुअली देखा जायछि. Sorry for that. सेइथिरे आपण माने नवरंगपुर चूज करि पारिबे. In that case आपण माने नवरंगपुर चूज करि पारिबे, बट कोरापुट टा गाइस मो भाबी देछि कलाहांडी. Sorry for that. That is my inconvenience. Sorry. Okay. Clear? ग्रेस मार्क नहीं कहि छि त मानकू एबी नवरंगपुर को भी तमे चूज करि पारिबो. नवरंगपुर को चूज करि पारिबो. हैला आज पॉलिटिक्स थिला. अरे पॉलिटी क्वेश्चन मिक्स है कि अछि त माने कोन लिखिबी ओडिसा जीके मिक्सचर क्वेश्चन एटा लिखि थांदी त पॉलिटी लिखिली कोन प्रॉब्लम. पॉलिटी क्वेश्चन भी आसीओ मिक्स है कि अछि. तो मते को एवरी डिस्ट्रिक्ट इज लेड बाय ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज ऑलवेज सिलेक्टेड फ्रॉम. एटा पॉलिटी क्वेश्चन आसला नै मते को. एटा पॉलिटी क्वेश्चन आसिला ना नै मते को. ऑप्शन कौन हबो मैम कलाहांडी हबो नवरंगपुर. जदि कलाहांडी संजीत बाबू ऑप्शन ने अछि देन डेफिनेटली कलाहांडी हबो. जदि कलाहांडी ऑप्शन ने नाही नवरंगपुर अछि देन नवरंगपुर को आपण माने चूज करि परिबे. बिकॉज़ जो चारिटा यूनिट आपनकर अछि 150 मेगावाट रा आपनकर चारिटा यूनिट अछि सेथुर गोटे लास्ट यूनिट आपनकर कोन स्प्रेड करछि नवरंगपुर पर्यंत. सो आपण माने ताकू भी कहि परिबे बट होली प्रेजेंट इन द कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट. मैम ओडिसा जीके 4 okay whatever. So कौन कहि छी ना every district is led by a district collector and जो district collector आपण माने देखो संदीप एबे भी कंफ्यूज अछंती कि both A and B. अरे गवर्नमेंट ऑप्शन को ढाबा मारिबा सिस्टम ता छाडी दियो. गवर्नमेंट ऑप्शन गाइस ढाबा मारिबा सिस्टम एग्जैक्टली छाडी दियो. कारण कोन अछि A and B अछि जो ओडिसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे आपण मानकर OS कोन हुए ना मैम OS माने सिलेक्ट हुअंती. Not the IS. Only the IS can be a collector or the district magistrate. But OS हेले आपण कोन ना तहसीलदार पर्यंत जाई परिबे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर्यंत जाई परिबे, बट IS केबे माने कलेक्टर केबे हेई परिबे. So IS will be the option A will be the right answer. The Indian administrative service. Clear? चलो. Next mate ko so every district in India is led by a district collector who is an official from the Indian administrative service. These officers are appointed to the post by the respective state government. Okay, so qualifying for the Indian administrative service different total terms and achi step guda dekhita. Next, where is Lord Jagannath second largest temple in Odisha located? Sabutu highest sabutu longest ame janiche temple Odisha ra, that is Jagannath temple. कोटी प्रेजेंट पूरी रे. बट सेकंड हम कहा को कंसीडर करूछे. सेकंड कहा को कंसीडर करूछे टेल मी दैट. जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो एंड शेयर करो. एंड जो माने एबे तक चैनल को सब्सक्राइब करिनो गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल. हां परिडा लिंगराज मंदिर सबुटु हाईएस्ट बट मु तम कहछि हाईएस्ट इन द केस जगन्नाथ टेंपल जो अछि बहुत जगह रे हमर ओडिसा रे बहुत जगह इवन केंद्रापड़ा रे हैला इवन हमर कोठी लाइक डिफरेंट गजपति रे भी अछि. तो एमंग देम पुरी रे हमर को जगन्नाथ टेंपल हाईएस्ट माने जगन्नाथ टेंपल भितरु पुरी वाला हाईएस्ट. बट ताटू कोटा रहउछि ना बारीपदा रे हमर रहउछि सेकंड हाईएस्ट. कोठी ना बारीपदा रे. द सेकंड largest temple of the Lord Jagannath in Odisha is located in the Baripada and is known as the second Sri Kshetra after the main temple in Puri. Clear? Mayurbhanj district jodi pachari thibo tahale right answer daba, else not ha hame Baripada thile Baripada ko choose kari paribo. 5 थर 10 थर खंड लाइक मारो. So what is the primary characteristic of ADR? Guys, ADR कोन मते को ADR कोन and तारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कोन. व्हाट इज ADR? तमे समस्त तो इवन तुमको चंदन सर पॉलिटी पढौचंदी, केडी सर भी पॉलिटी पढौचंदी. तो मते को ADR कोन? इमामी जगन्नाथ टेंपल. ये सामान्य बात राइट. पास दिस क्वेश्चन. Why? ADR. Okay, so ADR कोन कहूची? That is the adversarial nature, non-adversarial nature, jury based
रिजोल्यूशन जूरी बेस्ड हबनी कि लेंदी कोर्ट हबनी आपण एडवर्सियल और नॉन एडवर्सियल ले कहिबे सो एडीआर तो ऑब्वियसली आपण एडवर्सियल ही हबो हना नहीं मते को कोन हबो एडवर्सियल ना नॉन एडवर्सियल हबो मते को ना मैम एडवर्सियल हबनी बिकॉज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज द एडवर्सियल बट हमको कोन पचाची क्वेश्चन ना अबाउट द एडीआर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एडीआर कोन होइबो ना दिस इज नॉन एडवर्सियल नेचर. So this describes the collaborative approach of the ADR method like the mediation and the conciliation which focus on the preserving the relationship and finding the amicable settlement. That means court bahare आपण मानकर जो आउटर सोर्स सेटलमेंट हुए सपोज अपोजिट रो वकील आसिला आपनकर वकील गला देन गोटे केस फाइल हे जाई छी बट बिफोर दैट आपण मानको सेटलमेंट करिवार अछि सो सेटा कोर्ट बाहर सेटलमेंट होची सेटा आपनकर गोटे की फंक्शन ऑफ द एडीआर होना नै कुआ हाँ देन आपनकर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आपनकर कोन आसिला ना एडीआर इज अ मेकैनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम so the primary characteristic of ADR is its non-adversarial nature and the cooperative approach where the parties work together to find a mutually acceptable solution आपनकर कोर्ट रूम बाहर जोटा सेटलमेंट करा जाय क्लियर हां चलो नेक्स्ट कहिबा विवेक आउटा को रिलेटेड क्वेश्चन हबो जुडिशियरी आपनकर पॉलिटी अंडर आसीबोनी आ सेपरेट कर दला नेक्स्ट को which jurisdiction does a special court typically have which jurisdiction guys which jurisdiction does a special court typically have that is unlimited jurisdiction limited jurisdiction federal jurisdiction or that is the appellate jurisdiction which jurisdiction samastingar option kon asuchi na ma'am D appellate so this is the limited jurisdiction. A special court is constituted for a specific category of cases such as corruption, atrocities and the organized crimes. Hence, it doesn't have unlimited power over all type of cases but only those assigned by the statute or government notification. That's why this is the limited jurisdiction. Clear? This is a special court can try only certain cases defined by the law that created under the SC/ST prevention or the atrocities. Clear? Next jiba. Next mate ko in Odisha which courts deal with cases related to honor killing and violence are special court. So कौन आसुची ना the cases related to the killing हैला या फिर violence हैला जदी कौन government रा rule against जाई कि तमाने violence generate करूछो in that case कौन हबो मते को इन ओडिशा व्हिच कोर्ट हाई कोर्ट करिवो कि सुप्रीम कोर्ट तो ओडिशा कथा कहछि सुप्रीम कोर्ट को छाडी दियो दैट इज द SDJM and second additional district and session judge in Nabarangpur and district court so आपण मानकर गोटे स्पेशल कोर्ट थाय जोटा कि जो माने फिजिकली हैंडिकैप्ड थांती मानसिक विकृत लोक माने या फिर अंडर टीनेज रो पिला माने जो क्राइम करंती से माने को सेही कोर्ट रे जाई कि तांको कोन लाइक कोन प्रेजेंट हेबाकू पड़े एंड तांकर सुनवाई सेही कोर्ट रे हमर हुई सो सेही तीटा कोर्ट आपन ओडिसा रे टोटल दीटा अछि कोठी अछि ना मैम नवरंगपुर रे गोटे अछि आ गोटे बरहमपुर रे अछि सो क्वेश्चन कोन पचारि छी ना व्हिच को डील विथ द केसेस रिलेटेड टू द ऑनर किलिंग एंड वायलेंस एज अ स्पेशल कोर्ट इट स्पेशल कोर्ट पचार देला ताहाले कोथरे जीवो ना ऑब्वियसली कोथरे जीवो ना मैम नवरंगपुर एंड बरहमपुर केस रे पळेबो कारण एते ही कहली मैम टोटल दीटा कोर्ट अपन स्पेशल कोर्ट ओडिसा रे अछि नवरंगपुर रे गोटे बरहमपुर रे गोटे ओ कौन यार परिडा हमको भी क्लास रे न्यूज़ दे पार थाए okay so in Odisha special courts have been constituted to handle the honor killing and the violence cases in a more focused and speedy manner these courts function under the subdivisional judicial magistrate that is the SDJM and the second additional district and session judge at Kudi Nabarangpur and Barampur clear हाँ चलो नेक्स्ट मत को व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ओडिशा लोक अदालत गाइस ओडिशा लोक अदालत रा प्राइमरी पर्पस कोन रहउछि मते को व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ओडिशा लोक अदालत
मैम से कोर्ट को चैलेंज कले हाई कोर्ट को संजीत से कोर्ट को जदि आपण स्पेशल कोर्ट को चैलेंज करिवे हाई कोर्ट रे देन आपण अपील करि परिवे नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट है ना। चलो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ओडिशा लोक अदालत लोक मानकर अदालत लोक अदालत प्राइमरी पर्पस कोन रहइबो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस alternative dispute resolution election monitoring or the tax collection कोन हबो को मते what will be the right answer obviously alternative dispute resolution कोन ना dispute resolution करिबाटा ही। so the primary purpose of the Odisha Lok Adalat is to provide a speedy cost effective and amicable settlement of disputes outside the regular court system. It follows the principle of the conciliation not confrontation helping parties reach the mutual agreement through dialogue. Clear तार establishment कोठी कोठी हेची ना established under Legal Service Authorities Act 1987 ने हेची organized by Odisha State Legal Service Authority OSSC okay एतिकी टिके चेक कर दबा आउथर। नेक्स्ट मते को अंडर फीस एक्ट वाज ओडिशा लोक अदालत फंड गाइस ओडिशा लोक अदालत एबे कहिली एबे जस्ट कहिली को एक्ट रे थिला जो माने ठीक से सुनु तो संगे संग कहि दबो कोन वेरी गुड दैट इज द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 ना यस क्लियर। so the Odisha Lok Adalat was established under the Legal Service Authorities Act 1987 which provides the legal framework for the Lok Adalats that is the people's court okay next chalo so section 19 of the Legal Service Authorities Act 1987 empowers every state authority to organize Lok Adalats periodically for efficient justice delivery okay next अच्छा एबे को व्हाट इज लोकायुक्त कहिले कोन ना करप्शन द हेड लोक अदालत र हेड हमें कहि दउचे कोन नहीं आउट ऑफ दैट जो माने करप्शन एंटी करप्शन टीम so what does लोकायुक्त इन ओडिशा प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट लोकायुक्त काहा को करंती obviously एबे ही कहली करप्शन अगेंस्ट रे कोन होइबो एनवायरमेंटल इशू तो बिल्कुल हबनी करप्शन allegations against the public functionaries so government officials मानक अगेंस्ट जदी किछि करप्शन केसेस आसी गला in that case लोकायुक्त आपनकर कोन इन्वेस्टिगेट करबे हना नहीं एबे जेमिति आपनकर एसआई केस रे हला जदी गवर्नमेंट ऑफिसर मानकर ना बाहरिबो ताहाले तांको अगेंस्ट रे के लोकायुक्त स्टैंड करिवे है ना नेक्स्ट चलो so the Lokayukta of Odisha is a statutory body empowered to investigate the corruption misuse of power and कोना ना mal administration by public officials. It ensures accountability and the transparency in the public administration. Clear? So established heji kebe na Odisha Lokayukta Act 2014 came into force March 2019 that is the first in India to implement the Lokopal and Lokayukta Act 2013. Headquarter कोठी भुवनेश्वर रे composition chairperson थाए जने chairperson किए थिबे ना retired chief justice और जने judge से ही हे परिबे plus कोना up to 4 members add हे परिबे jurisdiction the chief minister MLAs IAS IPS officer एमाने मिसी के तांकर ओटे jury member गठन करिथान है ना honestly Lokayukta are toothless ऑफिसर हेले मो नेम रे आगो आसी बसियो हां आगो हुआ तापरे what does the Lokayukta in Odisha have jurisdiction to investigate sorry who does the Lokayukta in Odisha have jurisdiction to investigate kiye only members of the Odisha Legislative Assembly tanka against re or only government employees or chief minister and Odisha Legislative Assembly members or general public ka general public to kebe habani right answer kon habo ethi ma'am chief minister and Odisha Legislative Assembly members with including the government employees including whom the government employees so the Lokayukta of Odisha has the power to investigate the corruption abuse of power or maladministration hana nahi very good so this committed by the high level public functionaries next what type of allegation does a complaint under the Lokayukta Act in Odisha need to pertain to what type of allegations guys what type of allegations does a complaint under the Lokayukta Act in Odisha need to pertain to what will be the right answer acha ko mate civil disputes any form of misconduct
violation of traffic rules or the corruption that Lokayukta na asigala mane apan manko mind ku kono na corruption hi pale asibo. The corruption that constitutes an offence under the Prevention of Corruption Act 1988. Clear? So it is a complaint under the Lokayukta Act in Odisha must specifically relate to the corruption, abuse of position or maladministration by the public servant. Clear? Next. The Odisha Lokayukta deals with the corruption, not the general misconduct or civil disputes. Thoda yellow achi line whole detail taku shortcut re lekhichi tike padhibo. Next, which mechanism focus on a cooperative approach to dispute resolution? Acha abe ebe kohila right answer kon hobo ethi. Now which mechanism focuses on a cooperative approach to dispute the resolution? Kon hobo ethi? Jaldi that is ADR, special courts, criminal courts or appellate courts. Kon कहउछ तुम माने का आंसर कौन ADR. Let's check. So the alternative dispute resolution ही तारा full form रे अछि dispute resolution करिबाटा. So ADR will be the right answer. See, the ADR stands for the alternate dispute resolution, a system that emphasizes the cooperation and mutual agreement rather than confusion in resolving the disputes. It promotes the peaceful negotiation, conciliation and mediation, reducing the burden on the traditional courts. Clear? Very good. So non-adversarial nature कौन कहउची ना both parties work together to reach the fair solution, जोटा कि out of court settlement कहली. से माने कोर्ट को जाई कि गोटे सॉल्यूशन नेबे अपेक्षा जदी कोर्ट को गलो सपोज कहा पे गोटे पेनल्टीज गवर्नमेंट किछि भी माने कोर्ट किछि भी लगे देबो आउट ऑफ दैट जो त मानकर बिना केस फाइल हेई कि केस विथड्रॉ करी कि त माने बाहर सेटलमेंट करि पारुछ ताटू कम पैसा रे दैट्स वेल एंड गुड है ना. So the methods include कौन हो ना arbitration, conciliation, mediation, लोक अदालत. Clear? Next मत देखो. What is the role of the SDJM code in Odisha? Guys, SDJM code कोठी कहितली नवरंगपुर रे अछि and बरहमपुर रे अछि. हन नै मत देखो. So जते बेले SDJM code रो कोन रहिछि रोल मत देखो ना that is handling criminal cases, specializing in civil disputes, dealing with honor killing and violence cases, conducting Lok Adalats. कौन हबो अमित चिड़ा आनी मते फालतू आंसर दे कि जमा चिड़ा आनी माने सब ऑलरेडी डिस्कस सॉरी छी ना पेड क्लास रे डिस्कस सॉरी छी ता परे भी तमर ए डाउट. Yes, so right answer कौन हबो ना dealing with honor killing and the violence cases जोटा कि अपन मन कोठी कहती ना नवरंगपुर एंड बरहमपुर रे दीटा हमर स्पेशल कोर्ट अछि. See, so SDJM stands for the sub divisional judicial, yes, magistrate. The SDJM court primarily deals with the criminal cases that arises within the subdivision under its jurisdiction. Clear? And it's empowered under the Criminal Procedure Code, that is the CRPC, to try offence punishable with imprisonment of to 3 years and to handle preliminary judicial proceedings. Clear? Yes, Navarampur and Barampur guys. Next mother go. In Odisha, which body is responsible for implementing the provisions of the Legal Services Authorities Act 1987? What will be the right answer here? In Odisha, which body is responsible for implementing the provisions of the Legal Services Authorities Act 1987? Is that Lokayukta? Is that Odisha High Court, Odisha State Legal Services Authority or Indian Parliament? कौन हबो सर्विस अथॉरिटी हां तमानकर कोन ऑप्शन सी आसुची. वेरी गुड. So Odisha State Legal Service Authority, the Odisha State Legal Services Authority OSSC is the statutory body responsible for implementing the Legal Service Authority Act 1987. जेते बेले Legal Authority Act, Legal Service Authority Act 1987 कथा पछारिबो सेते बेले आपण मानक माइंड को आसी जो कोन ना Odisha State Legal Service Authority हन नै. मैम प्रीवियस आंसर ऑप्शन में ए कौन थिला ऑप्शन में ए कौन थिला माने कौन थिला एटा प्रीवियस तो ना ना अच्छा या प्रीवियस. व्हाट इज द रोल ऑफ द एसटीजेएम कोड इन ओडिशा? ऑप्शन सी ना कहले डीलिंग विथ द ऑनर किलिंग्स. कौन ऑप्शन को ए थिला हैंडलिंग क्रिमिनल केसेस आपनकर कोन ना मैम ओडे गला सेशन कोर्ट रे आपनकर क्रिमिनल केसेस आसे हैला एटा सॉरी छी ना. ओके नेक्स्ट चलो here. Okay, चलो next मत कहिबो. How many times had
Nandini Satpathy been appointed as the Chief Minister of Odisha. Nandini Satpathy तमे कौन कहूची नेमा first women Chief Minister हाँ ना नहीं बट केते थरा से तांकर टर्म आसीची केते थरा टर्म आसीची मते कुआ पायल सामंतरे प्रीवियस टाइम तो कहली ना केते थरा हेचंदी दी थरा ना थरे पक्का भाभी की कुआ दी थरा ना थरे ऑप्शन यस बिरजनी तोप्पो पूरा तोप्पो आंसर दोचो तमे राइट आंसर कौन हबो ना 2 टाइम्स so Nandini Satpathy was one of the Odisha's most prominent political leader that we know and first women chief minister that also we know that he served chief minister twice first term 1972 to 73 after that 74 to 76 is that clear को फॉर्म रु थिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रु गाइस थिले and he is very close associated with the Indira Gandhi also okay चल next which of the following articles is related to the appointment of governor कहला मते appointment of governor कर appointment को नहीं कि हमें कोटा relate करूछे which of the following article is related to the appointment of the governor article quick and first guys आज पिला सब कोड जायछन देखरे हां क्लास लेट हैला बोली सब कोड पळेले ना कोन C A भयंकर आंसर दोचो 52 56 55 और 58 let's see this is 55 so article 155 of the Indian constitution deal with the appointment of the governor of a state it states the governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal okay clear article 152 कौन कहूची right state definition of state for part 6 the state government article 156 कौन कहूची ना term of office to governor usually 5 years तंगर term रहिबो 5 years पुनी elect हेबे माने पुनी reappoint हेबे then 157 कहूची qualification for appointment as governor article 158 conditions of the governor's office example cannot be a member of parliament or state legislature एटर कंडीशन होची thus the power of appointment governor के article 155 okay next हरि बाबू ओडिसा रा गवर्नर यस मैडम लिसु मैडम हरि बाबू कंभमपति ओके चल नेक्स्ट में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अच्छा स्टेटमेंट टिके पढिलो एथरो करेक्ट कोटा लागुची फर्स्ट देखो द फर्स्ट इलेक्टेड एटे करेक्ट पचाची दैट मींस गोटे जदी करेक्ट हैला बाकी तीनटा को एलिमिनेट हमें करि परिबा होला नै the first elected assembly of Odisha was constituted on 3rd February 1937 and the chief minister was Krishna Chandra Gajapati hanki or second Hare Krishna Mahatab was appointed as the first chief minister of Odisha after India gained its independence 1947 pore ha all dekhila pore to mane all hi maribo all dekhila pore all hi maribo then the majority of the princely states that spoke in Odia joined India and were combined with Odisha yes or all of the above कौन हबो एटी कौन कहिछि देखो ना फर्स्ट सेंटेंस ता कौन अछि ना the first elected assembly of Odisha was constituted on 3rd February 1937 that is true okay that is what na ma'am true and कोडे गला रे this statement is correct so the first province assembly for Odisha was constituted on February 3 1937 chief minister kiye na Krishna Chandra Gajapati next देखो कौन अछि ना Hare Krishna Mahatab was appointed as the first chief minister of Odisha after India gained its independence this statement is incorrect while the Hare Krishna Mahatab was the chief minister okay he first held the position from April 1946 to 1950 before India's full independence हने नहीं मते को मैम गोटे रिक्वेस्ट मैम आपरे पॉलिटिक्स स्टार्ट हेनी आपण ओडिसा पॉलिटिक्स सारिला परे गोटे फुल आर्टिकल रा क्लास आनंद सब थिरे दुईटा एक्ट ओके ठीक अछि नेक्स्ट कोन अछि ना द मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट स्पोक ओडिया जॉइंड इंडिया वेयर दिस स्टेटमेंट गाइस एटा हमर कोन फुल्ली आसीबो ना कोन अछि माउथरे पढे टिके सो हरे कृष्ण माहातो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा हां हरे कृष्ण माहातो त आफ्टर इंडिपेंडेंस हेतरे ना हां तम अनुसार चला दैट इज ऑल ऑफ द अबव गवर्नमेंट ऑप्शन कारण ए दुईटा स्टेटमेंट्स आपनकर वेरी क्लोज सो तीनटा ऑप्शन तो नाही ना ऑल ऑफ द अबव गाइस नेक्स्ट which of the following is not a power of the
legislative assembly. Guys, which of the following is not a power of legislative assembly among all? मते कुह कोटा हमर legislative assembly रो power हबो नाही. कोटा हबो right answer कुह. Passing bills related to the state list, passing bills related to the concurrent list, passing budget and other financial bills, or appointing the chief minister. कौन हबो? लेजिस्लेटिव असेंबली सहित चीफ मिनिस्टर कर लेजिस्लेटिव असेंबली कर गाइस चीफ मिनिस्टर कर अपॉइंटमेंट सहित किछि रिलेशन ही नाही. चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट के करंती? गवर्नर अपॉइंट करंती. हना नै मते कुआ गवर्नर गाइस अपॉइंट करंती ना. सो द identify which of the following not of power. Okay, so passing bills related to the state list, state legislator have been the power to make all this. Passing bills also, passing budget also, but appointment of chief minister. According to Article 164 of the Indian Constitution, the governor appoints the chief minister. Clear? Next. How many female members are there in 17th Odisha Legislative Assembly? Guys, Odisha 17th Legislative Assembly रे केतना female member अछंदी मते कुआ. How many कुआ जल्दी कुआ. पंदर जन कौन ऑप्शन अच्छी कि 12 जन 15 जन 13 जन 18 जन. अरे 70 जदि 16 पचारना तो ताहाले तो हेले कहितांत. एटा टिके करेक्शन एटा रे ऑप्शन आपण माने को आ गोटे देई दोची. ऑप्शन कोन देबी त माने जानि दबो. ऑप्शन आ कोन देबी त माने जानि ही दबो. राइट आंसर कोन हबो ना मैम 11. केते ना मैम 11 जन. टोटल केते जन ना मैम 11 जन. ओके, सुबा पाढीले स्पीकर देन आपनकर कोन सुबा पाढी त छंदी स्पीकर देन आपनकर प्रभाती परिडा अछंदी ना नांदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. सो एमिति मिसे की टोटल 11 जन हेबे. 18th नाही दैट इज रॉन्ग. नाही यार तमन को ऐड करके दे देबे आंसर. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्य सभा? गाइस, राज्य सभा रा टेन्योर केते मते कहिलो. हाँ, राज्य सभा रा टेन्योर केते को 5 6 7 और 8 को जल्दी. Very good. That is 6 years. Next. So the Rajya Sabha is the upper house of the parliament and is a permanent body. It's never dissolved. And each member of the Rajya Sabha serves a term of 6 years and 1/3 of its members retire every 2 years. The total strength 250 members, 238 elect होंदी and 12 आपनकर को ना nominated by the president. एटा भी मन रखिता है ना. हाँ मिली. Very good. चलो next मते को which of the following is not a qualification to become a member of the legislative assembly? गोटे simple qualification नथिबो. Which of the following is not a qualification? एटा हेबा mandatory नुहा. Being a citizen of India, एटा तो mandatory. Being of the age 25 years, being a resident of the state, being a registered voter. कौन हबो right answer? सबुडा तो valid लागुची ना. सबुगरा valid लागुची, but out of that कोटा हमर invalid रहउची. ना being a resident of the state. Being a resident of the state is not a mandatory. According to Article 173 of the Indian Constitution, the qualification for membership of the state legislative assembly कौन रहिथिबो ना must be citizen of India, not less than 25 years, must be registered voter. एई तीनटा compulsory. But resident की ओडिसा रे से रहउथबो. अरे ओडिसा रे त घर मे भी से जाई कि दुबई रे रहउथबो, मे भी चेन्नई रे, मे भी लंदन रे, से कोन आसी स्टैंड करि परिबो ना. So एटा mandatory नुह. There is no requirement that the person must be a resident of the state to which they are elected. Okay, chalo. Next, the legislative assembly is
constituted under which article of the Indian Constitution? Question framing रे टिके बोमरांग हे गला कौन है लाएंगे माँ हाँ right सीमा so the legislative assembly is constituted under which article of the Indian Constitution 68 69 70 or 71 it is 60 sorry what बोला रे it is 70 so under article 170 of the Indian Constitution provides for the composition of the legislative assembly that is Vidhan Sabha of each state. It defines how the members of the assembly are elected and the population based representation of the constitution. Clear? Chala next. So article 170 specifically deals with the legislative assembly. Okay? 71 कौन पाई 71 एटा पनर कौन अछि ना composition of the legislative council. Council को पड़ा assembly हेले 70 council हेले गोटे वर्ष गोटे आगु को jump कर दियो 71 69 हेले creation or abolition of the legislative council in the state. Then article 168 constitution of the state legislature. Clear? Next. Which of the following is not a power of the speaker of the Odisha assembly? कौन कहिजे मते को combat legislative council. Yes. Next मते को which of the following is not a power of the speaker of the Odisha assembly? को मते कौन होगा ना authentication all bills passed by the Vidhan Sabha, presiding over sessions of the legislative assembly, preserving decorum and order in the chamber or appointing the chief minister. कौन होगा right answer मते को right answer guys jaldi yes so see so that is the appointing the chief minister. The speaker of the Odisha legislative assembly holds important procedural and administrative powers, but appointing the chief minister is not one of them. Powers and functions of the speaker कौन कौन होचंदी ना presides over the session, maintain order and decorum, authenticates the bills passed by the assembly before sending them to governor, then decides on disqualification everything. Okay, एतिकी तंगर form रहुची. Next मते कुआ how are guys money bills delivered to the legislative council? Money bills आपनकर legislative council को केमिति deliver हुए with the consent of speaker. एटी council को जाइछि एटा मन रखो with the consent of the governor, with the consent of the chief minister, with the consent of legislative assembly. Money bill सब बेले कहा को ना money bill always speaker कर consent देई कि ही legislative council को जीवो का को money bill speaker कर हना नहीं निदा आसिलानी बट क्लास भलो लागुची इच्छा होनी बैक करिया को अच्छा okay so money bills can be introduced only in the legislative assembly guys कोठी ना legislative assembly रे हबो बट तापरे council को जीवो कोठी ना the state and not in the legislative council. Once passed by the assembly the bill is sent to the legislative council for its recommendation, but however this transmission to the council is done only with the speaker's consent. जदि speaker consent देई देले से bill को कि हां ए bill ता में आगु को कोन ना मैम डिस्कस करि परिबा आगु को हमें कोन या पर आलोचना करि परिबा देन ओनली से पुनी काउंसिल को जीवो अदरवाइज आपनकर असेंबली रे ही डिसमिस करि देबार पावर का पाखरि ना स्पीकर कर अछि. Clear yes the speaker always decides the bill can be money bill or not तांको पाखरि ही से पावर अछि हैला. चल नेक्स्ट मते कहबो बाकी तांकर आर्टिकल 199 अकॉर्डिंग कोन होची that defines a money bill at the state level similar to the article 110 at the union level hochi 110 union level जोटा state level ले 199 सीटा. Role of the legislative council, the council cannot reject or amend or money bill. It must return to the bill within 14 days with or without recommendation. यदि either recommendation मिलिला या फिर न मिलिला 14 days भीतर ताकू कोन पुनी वापस आसीबार अछि either cancel हेकी माने reject हेकी नहले sanction हेकी. That's it. So the assembly may accept or reject those recommendations. Clear? So decision of the speaker on whether a bill is a money bill is a final or not. Clear? So money bill are delivered to the legislative council with the consent and certification of the speaker. Clear? Next.
Which of the following is not a qualification to hold the office of governor? कोउटा नुह कि office of the governor को hold करिकी रखिबा पई. Next मते को being a citizen of India, being of the age of 35 years, not being a member of the either house of the parliament of any state legislature, being a resident of the state for which he is to be appointed. कौन हबो ऑप्शन D पचारिची which is not a qualification. कौन हबो ना yes being a resident of the state or for which he is to be appointed. No matter or this is not a mandatory. Clear? So the qualification for the office of governor are laid down in Article 157 and Article 158 of the Indian Constitution. According to Article 157, a person to be eligible for appointment as governor must be a citizen of India and have completed the age of 35 years. According to Article 158, कौन कहूची ना the governor shall not be a member of either house of the parliament or the legislature of any state, and the governor shall not hold any other official or profit. Clear? जे कौन सी गवर्नमेंट ऑफिसर और तार प्रॉफिट सहित अंगर किसी रिलेशन नथिबो सेमिति कंडीशन में गवर्नमेंट को ना एमएम ठीक है कौन कहची C not being a member of either house of the parliament or any state legislator कहली ना तेरा बुझेली ना ज्योति मामा एटा एठे बुझेली देखो the government shall not be member of either house parliament or legislative assembly कोटार भी से हाउस न हेत माने मेंबर न हेतिबा दरकार ओके हां नेक्स्ट मते को who is the real power behind the executive branch of a state government guys real power किए आपण माने जानिथिबे घरे हेड ऑफ द फैमिली किए रहंती बापा रहंती हन नै बट रियल पावर कहार थाए होम मिनिस्टर हन नै माने हमर मां मानकर चले सो बेसिकली आपण माने कोंदु हु इज द रियल पावर बिहाइंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट दैट इज द गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द लेजिस्लेटिव असेंबली रियल पावर एग्जीक्यूटिव पावर कहिछि माने गाइस चीफ मिनिस्टर किछि गोटे डिसीजन केमिति जिवो आमे किछि गोटे बसी की गोटे प्लान एंड प्रपोजल करले सेटा को सेंड करले सेटा आइदर बिल सैंक्शन हबो रिजेक्ट हबो बट से बिल ता फॉर्म के करिवो से बिल ता त गाइस चीफ मिनिस्टर ही तांकर कमिटी मेंबर्स काउंसिल्स ऑफ मेंबर्स ए माने ही बसी त डिसाइड करिवे सो एग्जीक्यूटिव रियल बैकग्राउंड रे एग्जीक्यूट के करिवो चीफ मिनिस्टर ही करिवे ही इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सो द although the governor is the constitutional head of the state executive the real executive authority lies with the chief minister and the council of the ministers clear and article 154 कहूची the executive power of the state is vested in the governor however it's exercised in accordance with the advice of the council mama oh god bless me okay so of ministers that headed by the chief minister and article 163 kon कहूची there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid the any kind of government clear chalo next which article of the Indian constitution deals with the appointment and power structure of the state execute इतने सब ब्लेसिंग्स दियो नि रे पड़े मु पड़ेबी चलो which article of the Indian constitution deals with the appointment and power structure of the state executive कोड हमारा राइट आंसर मते को article 153 154 155 or 156 that is article 153 Alberto Sasmita article 153 okay so what it says now the state executive in India consists of the governor the chief minister the council of ministers and the advocate general of the state and the relevant article in the Indian constitutions are from article 153 to 167 भीतर एटा मेंशन हे की अछि ओके चल नेक्स्ट अरे वाह आज क्लास जल्दी सरी गेला ना टाइम वेस्ट अछि ओके सो आज ना क्वेश्चन एति की थिला गाइस अगेन कहूची महापैक जहार वैलिडिटी आपनकर 1.5 ईयर रहूची प्राइस 3499 ओनली भाबो गोटे लाइक लिवाइस रो जीन्स पिनि देलो ह ना सो बैच परचेज करो 1.5 वर्ष टार्गेट रखो 1.5 वर्ष भीतर आपण मानकर माने फुल डेडिकेटेडली पढिबार अछि
एंड बजेबार अच्छे एग्जामिनेशन ओके जदि आपण स्पेसिफिक बैच नौसंदी बहुत जल्दी हमर प्रभात 2.0 जोटा कि ओनली पीओ बेस्ड लॉन्च हेबा को जाउछि आपण माने जानिबे उत्कर्ष 2.0 बे गाइस लॉन्च हेबा को जाउछि जहार प्राइस भी ड्रॉप रहइबो बट जो माने बैच नेबा को चाहौ 3499 नै परिबो आगो को जेते बैच लॉन्च होबो से सब आपण महापे कंटाक्ट एंड गाइस किछि भी क्वेरीज अछि डू कांटेक्ट टू दिस नंबर नेक्स्ट टीचिंग एग्जामिनेशन भी गाइस सेम 1499 रहउछि प्राइस एंड पीसीएम आर्ट्स सीवीजेड वैलिडिटी 1 ईयर जोटा कि आपण मान नै परिबे एंड बहुत जल्दी आपनकर टीचिंग रे बहुत सारा न्यू फैकल्टीज जॉइन होचंती ऑलरेडी अपॉइंटमेंट डन ओके जोटा कि आपण मान पे सरप्राइज एंड गाइस दिस इज मी देखो ये हला मु ओके फोटो रे केते सुंदर लागु छी किंतु रियल रे गाइस एते के नुहा बुझिलो छाड़ो देखो मो सहित कनेक्ट हेबा को चाहू छ दिस इज सुदीप्ता जीके नेटवर्क एंड जदि टेलीग्राम चैनल जॉइन होउछ ए जो क्लास रा फ्री पीडीएफ आपण मान को एठी पठे दे ओके क्लियर सॉरी मैम ऊपर रागंतु नहीं बदमाशी करबिनी आपण का क्लास रे अरे संजीत काय रागबी तुम ऊपर इट्स ओके पार्ट ऑफ द क्लास आई अंडरस्टैंड बट डेली बेसिस रे जाउछ म छिड़ी जाउछ बुझिला बुझिस और कोड किछि डाउट रहिला और काली सेशन स्पेसिफिकली को टॉपिक ऊपर चाहू छ देन डू लेट मी नो को स्पेसिफिक टॉपिक ऊपर चाहू छ देन गाइस प्लीज लेट मी नो गाइस काली क्लास गाइस मु भी गोटे ह्यूमन बीइंग ना मोर भी केबे मूड ऑफ हुए ना मु गोटे रोबोट क्लास पासी माने संग संग मूड ऑन हिजो केबे केबे एमती भी हुए ना तो टिके मैनेज करि दियो मु तम मानकर बदमाशी को भी मैनेज करछि ना तो तम माने मु केबे केबे मूड ऑफ थिले भी टिके मैनेज कर दबो ह ना जिबा क्लास एंड आर्टिकल ऊपर क्लास आनिबी अच्छा सॉरी ओनली आर्टिकल हाँ हाँ बुझिली 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 ओके नो प्रॉब्लम काली ओडिसा रे जते इंपोर्टेंट आर्टिकल आपण मानकर अछि ता ऊपर क्लास आनिबी ओके जिबा ओके ओके गाइस चलो हाँ अमित जब दरकार हम मु तुमको कहबी बुझल एत उच्छन्न होगा दरकार नहीं काली ओडिशा नुह टोटल इंपोर्टेंट आर्टिकल आनतु आर्टिकल क्लास तुम केडी सर बोधे करेंगे ना इंडिया आर्टिकल उपरे और टोटल आर्टिकल दरकार डिमांड तुम बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ना कि हाउ विल ट्राई दैट सांग से डिस्कस करके तुम चलो thank you so much have a good night take care of yourself and first of all do prioritize your parents they should be your first priority no one else in the world ठीक अछि नाही मैम करि नांती अच्छा हो ठीक अछि आनिबा थैंक यू गाइस बाय बाय गुड नाइट